1 o'clock, लोकेशन पदुम एंड रेडी है निकलने के लिए, लगेज रेडी है, लास्ट कुछ एडजस्टमेंट हो रहा, उसके बाद निकलेंगे। काफ़ी लेट हो गया, सिम कार्ड लेने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि कोई भी शॉप यहाँ 10-11 बजे से पहले खुलती नहीं है। तो फॉर्चुनेटली एक बंदे ने शॉप ओनर का नंबर दिया एंड उनको कॉल करके हमने उनके घर से सिम कार्ड लिया। सिम कार्ड पड़ा हमें अराउंड 550 रुपीज़ का पड़ा। हमने 2 सिम कार्ड लिया, एक एयरटेल एंड एक जियो, ताकि दोनों में से कोई भी एक का नेटवर्क जाए तो दूसरा रहे। एंड पेट्रोल फिल करेंगे एंड आज हम लोग पहुंचेंगे कारगिल। कारगिल है अराउंड 5 आवर्स फ्रॉम हियर, बट रेस्ट लेते लेते आई थिंक 7-8 घंटे तो लग ही जाएंगे, फिर रात हो जाएगा कारगिल पहुंचने में। पर ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ राइडिंग टाइम बहुत मिलता है। शाम होता ही है 8 बजे, तो 8 बजे तक लाइट रहती है, तो प्रॉब्लम नहीं है। एंड रोड भी मोस्ट प्रॉब्ली अच्छा है यहाँ से कारगिल का। ठीक, मिलते हैं रोड पे।
30 किलोमीटर्स फ्रॉम कारगिल एंड छोटा सा ब्रेक लिया है। एक्चुअली गोप्रो का फुटेज फुल हो गया था क्योंकि कल का जो रिकॉर्डिंग्स था वो मैंने निकाल तो लिया था लेकिन कैम से डिलीट नहीं किया था, तो इसलिए डिलीट भी करना था, सो इसलिए रुके हैं। एंड यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। सुरू वैली जो है पूरा वो दिख रहा है यहाँ से, दिखाता हूँ मैं। तो pretty good व्यू। यहाँ से निकलेंगे तो फिर डायरेक्ट कारगिल में ही रुकेंगे। रोड्स ठीक है, बीच बीच में थोड़ा बहुत पैचेज है बुरा, पर ठीक है, वैसा कुछ खास नहीं है। हाँ,